Hello students and welcome back to my YouTube channel. This is Kashima Soni and today we are going to start another topic in the chapter series Alkenes of Organic Chemistry. So far we have discussed the rules, the IUPAC nomenclature and the classification of alkenes. So if you have not watched the previous video, I request you to solve that particular video first and then switch to this part of the section. Okay, so as I said that we have discussed nomenclature. So today we are going to see some of the methods of formation of alkenes. I repeat, today we will be seeing some of the methods, not all of them. So without wasting any more time, let's switch to that part of the chapter. So as I said, today we are going to see the first method of formation of alkenes and the most important one, which is dehydrohalogenation of alkyl halide. As the name suggests, dehydrohalogenation, which means removal of the elements of hydrogen halides from your adjacent carbon of alkyl halide, would be known as dehydrohalogenation. Okay, so D means removal and hydrohalogenation means removal of hydrogen halide, any of hydrogen halide. X could be anything, chloride, bromide, iodide, fluoride and so on, right? So by dehydrohalogenation of your alkyl halide, we'll get the fair yield of alkenes, and it is generally carried out by heating any of your alkyl halide with a strong base such as sodium ethoxide or concentrated alcoholic solution of potassium hydroxide. So it is a very easy equation to remember. You should know what is the base equation and then you should understand what kind of mechanism you are going to do over here, right? So it is the definition of your dehydrohalogenation of alkyl halide along with some of the examples that you can see over here, where your ethyl chloride on reaction with alcoholic solution of KOH, that is potassium hydroxide, will give you ethylene plus KCl and water as the side products. Okay, so how it is happening that how the removal of elements of hydrogen halide is occurring in this case, that we'll understand by the mechanism. So let's see the mechanism now. Alright, here we switch to the another slide. So dehydrohalogenation is an example of elimination reaction, and you know that elimination reaction occurs via various mechanisms, for example E1, E2 and even CB, right? So we'll see first of all these two only because these are only in our syllabus, which is why we are going to focus on E2 as well as E1 mechanism. So let's start with E2 mechanism first. So dehydrohalogenation of majority of your primary alkyl halide is going to occur by E2 mechanism. This is what you need to keep in mind, that अगर आपको कोई primary alkyl halide, for example, let's just say that in your example in your paper, this one example is given to you, that is ethyl chloride, that is an example of primary alkyl halide. So if this is given and along with the alcoholic KOH, they have asked that what is the product and predict the give the suitable mechanism for the same. So as you know it is primary alkyl halide, वहां से आपको clear हो जाना चाहिए कि भैया ये हमारी E2 mechanism हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो आपको इतना तो यहाँ पे clear होना चाहिए. So as I said that dehydrohalogenation of majority of your primary halide alkyl halides are going to occur by E2 mechanism. Okay, now kinetic studies of this reaction reveal that this reaction follows second order kinetics, that is rate of the reaction is proportional to the concentration of alkyl halide as well as the concentration of base. Also it is a concerted mechanism, which means it is a one step process and occurs through a transition state that you are going to see over here, right? So from this particular reaction mechanism, you can see that how elimination, that is E2 mechanism, you are seeing in your primary alkyl halide. So this is an example of your primary, generalized example of your primary alkyl halide, where this particular carbon which is attached to the functional group, that is the functional group over here is your halogen, is basically alpha carbon, and the carbon next to it is going to act as beta carbon. Okay, I hope alpha beta concept is clear to you. So now what is happening, how this particular alkyl halide is getting converted to your, your alkene, is that one base will come and abstract the proton from here. Now
the electrons from this carbon H bond will get shifted to the bond between carbon and carbon, resulting into the formation of this particular new pi bond in between these two carbons. Okay, and your X negative will leave as a leaving group over here, and you will get the HB positive and X negative as the side product over here. So it is quite easiest reaction, right? And you can see it is occurring in one step, and it is going to, the rate is going to depend upon the concentration of both alkyl halide as well as base, which is why it is going to follow your second order kinetics. It is quite easy, right? Some of the examples you can see, and specifically if you say that dehydrohalogenation in case of primary alkyl halide is an example of beta elimination. Okay, बीटा की साइड से आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, देन उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए कार्बन कार्बन बॉन्ड में, वहां से आपका X जो है टेकिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन X बॉन्ड पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेके एज सच एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो वही आप देखोगे यहाँ पे भी इन दोनों रिएक्शन में. फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट केस यू कैन सी दैट हाउ योर HBr इज गोइंग फ्रॉम योर अल्फा बीटा पोजीशन, एंड वो निकल गया बाहर. पीछे आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे आपके पास मान लो पोटेशियम का कोई बेस आपके पास, तो सॉल्ट गिवन है, उसका कोई बेस गिवन है आपके पास, नॉट सॉल्ट, उसका बेस गिवन है आपके पास यहाँ पे, एंड पोटेशियम मिथॉक्साइड फॉर एग्जांपल HSA. तो वहां से क्या होगा कि आपका HBr तो यहाँ निकल गया, लेकिन क्या सिर्फ वही निकलेगा? नो, Br नेगेटिव एज सच बाहर पड़ा है आपके पास, H पॉजिटिव भी पड़ा है यहाँ पे. अब क्या होगा यहाँ पे एज सच आपका प्रोडक्ट, दो जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगी? मेन तो अल्कीन एज अ मेन प्रोडक्ट बन गई, बाय प्रोडक्ट जो आपके पास यहाँ बनेगा दैट इज KBr, एंड अनदर वन दैट यू कैन सी ऑन योर रिस्पेक्टिव स्लाइड्स. ओके, सिमिलरली आपके पास यहाँ भी सेम रिएक्शन हो रही है, HCl बाहर निकल गया और आपके पास यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बन गया है, न्यू पाई बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड, दैट इज योर साइक्लोएल्कीन, एंड another side products you can see as such. So this is how you are going to see the generalized reaction of your E2 mechanism in case of your primary alkyl halide. So one more request I want to do from you people, that whenever you are watching any sort of videos or anything, always keep your pen and paper with you, because you are not going to understand anything by just cramming all these details. You need to practice the reactions as much as possible for a good memory, right? So chalte hain aage, let's see. So over here you can see the proper mechanism of your dehydrohalogenation, where your OH negative, that is your base. Okay, base का काम क्या होता है? प्रोटॉन को abstract करना. So as the base, that is hydroxide ion, begins to abstract the proton from this beta carbon atom, which is next to the carbon having a halogen atom attached to it. Okay, so क्या होगा यहाँ पे? This sigma bond in between your carbon and hydrogen, it will begin to break. Okay, and a new carbon carbon bond will begin to form. ठीक है, ये आपका simultaneously process हो रहा है, so it leads to the formation of this particular transition state, where this particular bond, just give me a minute. Okay, let me erase it for you. Yeah, so which bond is breaking? As you can see, this particular bond is getting broken down, and this particular bond is formed. The new pi bond is formed over here. So it will ultimately end up giving you ethylene as the main product and H2O and KBr as a side product. So this is the proper mechanism which you are supposed to explain in your paper as well. So over here you can clearly see that this is how you are calling it a concerted mechanism, and why it is a one-step reaction. This is how you can say that. Okay, so because breaking and making is occurring on the same time, breaking of bond and the formation of a new pi bond is occurring on the same time, which is why we are calling it a concert. Now that's all about the mechanism. Let's just discuss the stereochemistry of the same reaction. So it has always been observed that your E2 mechanism or E2 elimination reactions are much more favorable or facile when the two departing groups, that is your H and X, that is your halide over here, they are anti to each other, that is they are in anti-periplanar plane.
something like this. Okay, so in the case of your trans 4 tertiary butyl cyclohexyl, you can say cyclohexyl bromide over here. You can see that both of your hydrogen and bromide groups are on the same side, that is are on the anti-side to each other. No, not in the case of trans, it is in the case of your cis, that both of your hydrogen and the leaving groups, they are lying opposite to each other. They are definitely lying on the same plane, but they have anti-periplanar geometry. Anti-periplanar geometry. By that I mean that both your departing group H and Br, they are present on the axial positions. As you can see, A stands, small e stands or signifies axial position. So what is happening in case of your this is 4 tertiary butyl cyclohexane, that this anti-periplanar geometry is easily achieved since your both hydrogen and bromine, they are present on axial orientation, right? So also they are lying on the same plane, which is why it is easy to give your 4 tertiary butyl 1 cyclohexene. Okay, so it is very easy to achieve alkene from here, while in case of your trans, it is not that easy to achieve. Why? Because they are not in the same position. Both the departing groups, that is H and Br, both are not on axial position. Your hydrogen is lying on axial position and your bromine over here is lying on equatorial position, which is why over here it is somehow difficult to achieve your alkene. Okay, so which is why we stated a fact that E2 mechanism is much more facile in case of your anti-periplanar geometry, जो यहाँ पे आपको cis वाले isomer में देखने को मिलेगी, ना कि trans वाले में. I hope that is quite clear to you. और अगर आपको बाई चांस देखने को मिल भी गई ट्रांस के केस में, सो द रेट वुड बी वेरी स्लो. जितनी फास्टली आपका अल्कीन सिस वाले आइसोमर से बन जाएगा, उतने ही स्लोली आपके ट्रांस आइसोमर से उस अल्कीन में कन्वर्जन होने के चांसेस हैं. अंडरस्टूड? सो आई होप द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज आल्सो अंडरस्टैंडेबल दैट E2 mechanism is much more facile in the case of anti-periplanar geometry. Okay, so कुछ example देख सकते हैं आप यहाँ पे. Okay, so this is the one case. As I said that anti-periplanar geometry का मतलब ये है. Okay, let me clear this to you first of all. कि अगर आपका एक डिपार्टिंग ग्रुप मान लो एक्सियल पोजीशन पे है, तो दूसरा डिपार्टिंग ग्रुप भी एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए. अगर ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो वो भी इक्वेटोरियल पे ही होना चाहिए. इफ द केस इज अदरवाइज, देन आपकी रिएक्शन नहीं होगी प्रोसीड, और अगर होगी भी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा. सो फॉर एग्जांपल ओवर हियर वी हैव टेकन द केस ऑफ योर दिस पर्टिकुलर केस ओवर हियर वी हैव डिस्कस्ड. तो आप देख सकते हो उसका बोर्ड फॉर्म बनाया है यहाँ, सॉरी चेयर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की है यहाँ पे हेक्सेन की. एंड सिमिलरली योर हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन ओवर हियर दे आर प्रेजेंट बोथ ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब कि यहाँ पे चांसेस हैं आपके एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री के. ठीक है, और यहाँ पे आपके हेक्सेन बन सकती है. सो देखो कैसे बनेगी. ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा आपका बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया प्रोटॉन को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए इस बॉन्ड पे, एंड यहाँ से आपका ब्रोमाइड बाहर निकल गया, एंड इट विल बी गिविंग यू अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक आई शो यू समथिंग लाइक दिस. So this is the final product that we'll get over here. So this is another case, and let's just shift to the next slide. So over here you can see the example of dehydrohalogenation of mesostilbene dibromide, that is this one, which gives cis 1-bromo 1,2-diphenyl ethene, and optically active stilbene dibromide gives trans 1-bromo 1,2-diphenyl ethene. देखिए अब इसे ध्यान से. इसी समझने से पहले एक बार फिर से पिछली स्लाइड में चलेंगे हम. लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड अगेन. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री जो आपकी है, वो एंटी एलिमिनेशन जो है वो ज्यादा फेवरेबल होगी एज कंपेयर टू योर सिन एलिमिनेशन. ठीक है, एंड व्हाई इज दिस द केस? बिकॉज जो आपका एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री में जो आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी फॉर योर एंटी एलिमिनेशन, दैट विल अकर
from the most stable staggered conformation with lower energy. This is the staggered conformation that you can see over here. ओके कि अगर दोनों हाइड्रोजन और ब्रोमीन मान लो एक्सियल पोजीशन पे आ गए तो इस तरह से अटैक होगा और इसलिए आपके पास आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बनने के चांसेस होंगे. ठीक है. सो इन केस ऑफ योर एंटी एलिमिनेशन ट्रांजिशन स्टेट इज क्वाइट स्टेबल और उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी, लेस एनर्जी होगी. ठीक है. quite stable or less energy as compared to the high energy eclipsed और गॉश conformation जो आपको सिन में मिलेगी. ये सब आप अपने stereochemistry chapter में पढ़ेंगे. So for now you can just remember that why your anti elimination is favorable because उसकी जो transition state है वो बहुत ही उसकी एनर्जी कम होती है और जिसकी भी एनर्जी कम है आपको पता है वो अल्टीमेटली स्टेबल होता है. तो आप ये याद रख सकते हो अभी के लिए. ठीक है. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे. सो ओवर हियर इन द फर्स्ट केस दैट यू कैन सी दैट इज द केस ऑफ मेसोस्टिल्बीन डाइब्रोमाइड. अब यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि RNS क्या है. बच्चे R मींस रेक्टस कॉन्फ़िगरेशन एंड S मींस सिनिस्ट्रल कन्फर्मेशन. ठीक है. आप देखो होगा कि इसके लिए भी इसकी नेमिंग के लिए भी इसके नॉमेनक्लेचर के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते हैं. आई मेक अनदर वीडियो रिलेटेड टू दैट यू बेसिकली स्टडी इन योर स्टीरियोकेमिस्ट्री. दिस चैप्टर अल्कीन is in your BSc semester 1 and your stereochemistry you will be seeing most probably in your second year. So for now I can just tell you that rectus means your clockwise configuration and sinistral means your anti-clockwise configuration. So अब आप इसे किस तरह से यहाँ पे इस कार्बन को लेके आपने किया है rectus, you can say that. Let me just clean this slide for your better understanding. Okay. So यहाँ पे अगर आपने इस पूरे ग्रुप को एक ग्रुप मान लिया मान लो. ठीक है. तो अब आप क्या देखते हो जब भी आपने नॉमेनक्लेचर देखना होता है RNS के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हो बेसिकली सबका मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. अब यहाँ पे इसको पूरे को आपने एक ग्रुप मान लिया तो अल्टीमेटली इसका जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे. ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया. ठीक है. ये सेकंड पे आ गया, ये थर्ड पे आ गया, ये फोर्थ पे आ गया. तो इस तरह से आपकी कौन सी आपके पास रोटेशन देखने को मिल रही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. इफ इट इज क्लॉकवाइज इट इज R. So यहाँ पे R given है which is why you can say that it is clockwise and rest is the opposite of the same. तो इस तरह से आप खुद करके देख सकते हैं. अब अगर आपने इसको दूसरी कंफर्मेशन में लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने इसे इस तरह से यहाँ पे लिख दिया तो देखिए यहाँ पे क्या हो. So this is your Fischker projection. Let me clear. Yeah, this one was your Fischker projection which is written now in the form of Newman projection. The same diagram we have converted into Newman projection. So for example you can see over here. So in case of Newman projection you can see that there are three different kind of bonds. That is, this one dark one is your wedge shaped line, this is your dashed shape and this is your solid lines. Okay, so your solid lines, what they are representing, these are representing the bond which is lying in the plane of the paper. Okay, so that is what it signifies. The dashed lines, they are representing that okay, this one is the dashed line and this one is a wedged line. So wedge shaped lines, they are representing the bond is protruding out from the plane, by which you can say that ये वो वाली lines हैं, ये वो वाली bond है जो आपके व्यूअर को फेस करें. फिर बेसिकली आपकी इस तरह से अगर हमने नेकेड आई यहाँ पे रख दी मान लो, तो अगर आपकी आई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा और ये जो डैश्ड वाले दे आर बेसिकली अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. सो द वेज्ड बॉन्ड्स दे आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ओके, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, द बॉन्ड विच इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड डैश वाले हो गए द बॉन्ड विच इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. ठीक है, दिस इज इजी टू रिमेम्बर. Also the bond which is extending behind the plane. So ये आपकी इन तीनों dashed, wedged और solid lines को जो represent करती हैं वो है ये, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे. Now हमें तो क्या समझना था, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन. हम कहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री में चलेंगे, वो तो बहुत ही डेप्थ में आ जाएगा आपका टॉपिक. आपने देख लिया RNS को डिस्कस करने में कितना टाइम लग गया हमको. ठीक है, न्यूमैन को डिस्कस करने में, इनके बॉन्ड्स डिस्कस करने में. सो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं पता थी तो मैंने बता दी है.
सो एज आई सेड कि आपका H और Br जो है एंटी कॉन्फ़िगरेशन में होने चाहिए, तभी आपके पास प्रॉपर्ली एलिमिनेशन होंगे और आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह आप इसका केस देखोगे, इसी तरह दूसरा एग्जांपल वाला केस देखोगे, यहाँ से आपका H पे अटैक कर दिया OH नेगेटिव ने, या फिर एब्स्ट्रैक्ट कर लिया प्रोटॉन को, ये बॉन्ड आपका जो इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड में वो इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए एंड यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल गया एंड दिस विल एंड अप गिविंग यू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके राइट। सो सिमिलरली आपकी दूसरी रिएक्शन होगी यहाँ पे एंड आपके पास आपका एंड में प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा, क्वाइट इजी राइट। सो ये तो हमने E2 मैकेनिज्म देख लिया, अब E1 मैकेनिज्म भी तो होगा, E1 एलिमिनेशन भी तो होगी। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैन आल्सो अकर बाय E1 एलिमिनेशन, बिकॉज हमने तो भैया सिर्फ प्राइमरी हैलाइड की बात की कि प्राइमरी हैलाइड में E2 एलिमिनेशन होती है, ठीक है। अब E1 एलिमिनेशन में क्या होगा, जितने भी सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड होंगे उसमें आपको E1 एलिमिनेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। सो मेनी secondary as well as tertiary halides undergo elimination when heated in ionizing solvent. For example, this tertiary butyl bromide, when heated in alcohol, undergoes dehydrogenation, resulting into the production of isobutylene as such. Okay. So while talking about the mechanism of this particular E1 reaction, you can see the rate is only depending upon the concentration of your alkyl halide, not on the base. While in the case of E2 mechanism, remember the thing simultaneously, then आपको easily याद हो जाएगा. So over here your rate is depending upon the concentration of alkyl halide. Over there in the E2 mechanism, the rate is just depending upon alkyl halide as well as base. Okay, so over here you can see that first step पे आपके पास क्या हुआ, आयनाइजेशन हुई वही आपके पास बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है अगर तो मैकेनिज्म ऑफ आपका मैकेनिज्म ऑफ योर particular reaction intermediates, I have already uploaded that particular chapter, full chapter series. So वो लिंक आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और जाके उसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आगे की चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया विच इज प्लेनर केमिकल स्पीशी एंड Br नेगेटिव एज सच निकल गया. अब ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल आपका कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ पे क्या होगा, आपकी फास्टली आपके पास जो होगा योर electrons from this particular CH bond will get shifted to this carbon carrying positive charge, resulting in the formation of isobutylene and H positive as such निकल गया. अब ये H positive और Br negative आपस में react करके HBr दे देंगे. So this is how the mechanism occurs in this particular case. Okay, so your E1 reaction depends upon the stability of carbocation. Okay, so unlike your E2 mechanism, यहाँ पे E1 की कोई stereochemical preferences नहीं होती हैं, because यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है, which is why आपके यहाँ पे कोई भी stereochemistry की हम डिस्कशन नहीं करेंगे. Okay, and just like your E2 reaction, if I have not kept the point over there, जैसे कि आपके E2 reaction में आपको elimination product के साथ substitution product भी मिलता है साइड पे, उसी तरह आपका E1 mechanism में भी होगा, आपको वहां पे भी substitution reaction और substitution product मिलने के chances होते हैं. अब हम देखेंगे आगे regiochemistry और orientation of E2 and E1. So this we have already discussed. I have already mentioned all these 3 points, you can see. And as I said, now next is the topic is regiochemistry or orientation of E2 and E1 reactions. That is basically over here we are going to take into account the very important rule, that is Sedgwick rule. Now Sedgwick rule आपको क्या बोलता है कि जो भी अल्कीन आपके पास हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी वो प्रिडोमिनेट करेगी. अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको. अब सेडजिफ रूल को देखने की बात कहां से, देखो भैया बात ऐसे है कि देयर आर हायर चांसेस दैट एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिले वो मिक्सचर की फॉर्म में मिले, मतलब मिक्सचर ऑफ आइसोमरिक अल्कीन इज ऑब्जर्व्ड. अब इस आइसोमरिक अल्कीन में कौन सी वाली अल्कीन ज्यादा क्वांटिटी में आपको ज्यादा अमाउंट में मिलेगी, वो तो आपको ऐसा कुछ नहीं पता लगेगा, उसके लिए कोई ना कोई रूल चाहिए. तो वहीं से इजाद हुआ आपका सेडजिफ रूल. ठीक है, सेडजिफ रूल में क्या होता है कि जितने आपको बेसिकली
greater the number of substituent across the double bond carbon, more stable is that particular alkene. So I want you to write it down. Greater is the number of substituents on double bonded carbon, on या across कर दो इसकी जगह, across double bonded carbon, more stable is that alkene. More stable is that alkene. ओके, सो अब देख सकते हो आप यहाँ पे आपका दो केसेस से आपके चांसेस हैं कि आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो. अगर मान लो फर्स्ट के केस से हो रहा है तो OH नेगेटिव ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया हाइड्रोजन को, यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, आपका 1 ब्यूटेन बन गया. लेकिन इफ सेकेंड से एब्स्ट्रैक्शन हो रही है तो आपके पास सेकेंड प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे 2 ब्यूटेन. अब प्रोपोर्शन से आप बोल दोगे कि मैम 2 ब्यूटेन ज्यादा आपका प्रीडोमिनेट कर रहा है, लेकिन आपको कैसे पता लगा? वेस्ट रूल की वजह से कि आपका जहां डबल बॉन्ड के अराउंड ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, वो वाली अल्कीन ज्यादा डोमिनेट करेगी. यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ये आपके पास, ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप का काम करेगा, यानी कि ये यहाँ एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है. तो फिर कौन सा सबसे ज्यादा आपका स्टेबल हुआ? 2 ब्यूटेन. ओके, और सबसे मेजर प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा 2 ब्यूटेन. 1 ब्यूटेन भी बनेगा बट कम अमाउंट में बनेगा. इज दैट लाउड एंड क्लियर? राइट. सो yeah, and another example you can see, okay, not this one. So yeah, that is all over here, but one more example that I would like to show you, and just give me a minute. You can pen it down along with me. Let me switch to another color. So let's take the example of 2-bromopentane. Write it down along with me. That is CH3 CH, that is 2-bromopentane, CH2 CH2 CH3. Okay, now as I said, what it is? 2-bromopentane on reaction with sodium ethoxide CH3CH2ONA or alcohol CH3CH2OH upon heating will give you trans as well as cis isomer CH2CH3HHCH3. This is your trans isomer. Okay, and another one is your CH2CH3 CH3 this one is your cis isomer. This is your trans 2-pentene. This is your cis 2-pentene. Okay, and another product is your CH3 CH2 CH2 CH double bond CH2. Okay, now so over here you can see last one is your 1-pentene, the name of this particular alkene. So now you have to see the more substituted one. So this is the double bond, and on both sides of double bond we have alkyl groups present, right? So likewise this is much and much more substituted, but this one is your double bond, and on one side only your alkyl groups are present. So now you can say that this is not that much dominating as compared to trans. So which is why trans product formed is your approximately 51%, cis-pentene is 18%, and 1-pentene is the least stable one. So it is actually cis-pentene is least stable as compared to your 1-pentene. And why is it so? The reason behind this is that because it is very much substituted as compared to your cis 2-pentene. So even your trans 2-pentene is much more stable as compared to cis 2-pentene. So which is why it is the majorly formed product. After that will come your 1-pentene, and the least one would be your cis 2-pentene. So I hope that is quite clear to you right now, and this is the last example that we'll see over here in this case. So
yeah, that's all about this particular reaction, that is dehydrohalogenation. In case you have any queries, you can tell me in the comment section below. So yeah, that's all about it. Thank you for watching my video. Keep liking, keep sharing, and do subscribe my channel. And yeah, you can follow me on Instagram also and on LinkedIn as well. So press the bell icon for latest updates, and thank you so much.